नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna and our humble obeisances to all the attendees who have gathered here to listen to this Bhagvatam Katha. I especially welcome the senior devotees of the International Society of Krishna Consciousness, Iskcon, and I welcome all the Vaishnavas who are listening through the medium of Facebook, Zoom, YouTube, etc., from all the parts of the world. I especially welcome the organizers of this katha who have organized this katha to get the pure devotional service and love of the God, and in the reverence of their ancestors, just like Manisha Mata, Chitaji, Purab Bhai, Chitu Bhai, Vanila Mataji, Deepak Bhai, Amish Bhai. So, in their memory and to get their mercy and blessings, the organizers from US and UK, Hina Mata, Amish Bhai, Piyush Bhai, Jayashri Mataji, Pratik Bhai, Darshna Mataji, Prabhu, and Mataji. And especially Kamlesh Bhai and Arpana Bhabhi. Mukesh Bhai. How much mellow they have that he's listening from his shop. So I welcome you all on the fourth day of the 321st Katha, and our heartfelt humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. Somehow I'm feeling very ecstatic today. And why not? Because today is Ekadashi in US. And that too, it is the Shat Tila Ekadashi. So it is auspicious to eat and distribute sesame sweets. So you all are aware about the Ekadashi. Let me share one pastime with you. In the South India, there is a place called Ushiner, whose king was Ranti Dev, who fasted for almost 40 to 42 days. We cannot fast for 42 hours. He fasted for 42 days without eating or drinking anything. And at the time when he was about to open his fast, so there is a person that
people started coming. The Brahmana came, and then the ऐसे Vaishya, परमात्मा and he distributed ऋषिनाथ देश everything. जो भारत में Such a प्रसिद्ध है, pious and righteous king महाराज रंतित was the जी के चले king जाने के बाद of उस this उशिनर देश place, में ऐसा समय Ushinradesh. आया And after कि his इंद्र passing, देवता ने there वर्षा was नहीं की, a time लगातार when 10 there was वर्ष no तक rain for इंद्र देवता 10 वर्षा नहीं years. किए। There was no rain. बाकी सब तो ठीक है, परंतु जिसका जीवन गाय के ऊपर निर्भर है, जिनके Everybody पास else can भारी मात्रा में गोधन है, survive, but people उनके who are लिए वर्षा dependent न होना ये of their बहुत livelihood खतरे की on निशानी है। the cows, the cow जहाँ herds, बारिश it नहीं is होगा, very फसल नहीं होगी, dangerous, घास नहीं होगी, because until and तो unless they have किसान rain and then the किसान grass को and subsequently उशिनर देश के milk from the सारे cow, लोग they cannot भूख survive. से व्याकुल हो गए। So the और उस people समय were उनको पता चला worried and कि भाई anxious, भारत में मथुरा में and that गिरिराज time they came to गोवर्धन है, know मेरे पीछे भी गोवर्धन महाराज हैं, that तो गोवर्धन की in धरती है, Mathura's गोलोक Govardhan सूर्य है और गायों के लिए घास mountain, आदि in my background also संपूर्ण is मात्रा में Govardhan ji is here. उशिनर देश के सारे गोप So ब्रज all the वृंदावन cow से herds शिफ्ट हो गए, वृंदावन में shifted आ to गए, Vrindavan ब्रज वृंदावन में रहने लगे। and started नए नए लोग, residing in कभी Braj कभी हर महीने Vrindavan. नए नए लोग आते हैं। So they were new to the अब एक area. दिन उन गोपों की लड़कियों ने कृष्ण का दर्शन कर लिया। And one day, the, जब their वो नए नए ब्रज daughters में आए तो ब्रजवासियों saw ने कहा था कि the देखो Lord Krishna himself, उस तुम and they यमुना became के attracted तट to पर his गए और form. पानी भरने जाओगी ना, So they were informed that तो if you go यदि कोई to काला fetch कपड़ा water पहन के at दिखाई Yamuna देगा ji, and तो if you उसको कहना see यहाँ वहां मत देखना, a bluish blackish देख boy, लेंगे तो क्या होगा, then don't look at अगर him. देखेंगे They तो asked that if you look at वह him, ग्रह what will ऐसा happen? He चढ़ said जाएगा that फिर उतरने if का you नाम look नहीं at लेगा। him, then the कुशीनर देश की planet, लड़कियों ने बड़े ध्यान his से सोचा presence एक will दिन कृष्ण never का be दर्शन हो ही गया। removed from your life. So और they भगवान were श्री very कृष्ण careful, but उनको yet देखकर परम one day मोहित they हो गई। saw him and they were attracted तो so much to उन्होंने him, देखा कि कृष्ण रोज राधा रानी से मिलते हैं and they saw that और जिस पुरुष on के daily basis प्यार में he हम meets पागल हैं, Radha जिसको Rani, देखकर हम मोहित सी हो रही हैं, and मरी सी जा रही हैं, for whom वो to whom we are कृष्ण राधा के attracted, पीछे पागल है। and we और देखिए are हमारे ब्रज में गाते हैं, getting ecstatic, but सुन he is बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, बड़े बड़े देव द्वार पे ठाड़े, बड़े बड़े देव द्वार पे ठाड़े, बाट तकत मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। हे so बरसाने they वारी, हे realized महारानी, that अखिल ब्रह्मांड the नायक Krishna to भगवान whom they're कृष्ण madly in love जिनके is स्वरूप madly में in love with देवता Radhika खड़े Rani, रहते हैं लाइन and लगाकर even कि the कब demigods कृष्ण की एक stand झलक मिलेगी, कब in कृष्ण का queue दर्शन मिलेगा। to see just a बड़े glimpse, to बड़े have a देवता glimpse of उसके द्वार पर Krishna, लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। हे बरसाने वाली राधा रानी, and that वो कृष्ण तुम्हारी resident, राह देखता है। he waits दुनिया for किसकी you, राह O देखती है? Radhika देवी Mai. देवता जिसकी राह देखते हैं वो कृष्ण राधा की राह देखता है। So he पूरे waits श्रावण to महीने में have a 30 glimpse दिन of महीने you. भर लोग कृष्ण को झुलाते हैं, पलने में या झूले में झुलाते हैं, So लेकिन वो कृष्ण श्रीमती राधा रानी को झुलाते हैं। for a month, बड़े बड़े people देवता जिनसे बड़े बड़े put मोती तक Krishna जड़ते in फिरते swing, हैं, लेकिन वो but कृष्ण ब्रज में छाछ के लिए Krishna मट्ठा के लिए नाचता है। swings with Radhika तो Rani उन and swing. लड़कियों ने देखा कि ये कृष्ण राधा के पीछे And पागल है, for a little bit of तो buttermilk, नंद he नंदन को प्राप्त करने dances. के लिए
राधा ही हमको उपाय बता सकती है। So these girls ये सारी agreed that कहानियां only श्रीमती Radhika राधा Rani रानी के can पास गईं और reveal बात the करने लगी। secret of how हे to कमल लोचन, attract हे Krishna प्रिय स्वरूपे, towards them. हे वृषभानु नंदिनी, हे राधा रानी, So they कृपया asked, करके "Oh, the daughter बता of दीजिए Rishbhanu, कि ये श्याम please सुंदर कृष्ण हमें कैसे let us प्राप्त know होंगे। how we can get Lord श्रीमती Sri राधा रानी Krishna." कहती हैं कि नंद And नंदन का Srimati श्याम Radhika का Rani मिलना says that देवताओं के लिए भी the दुर्लभ है। son of Nand कृष्ण आए Maharaj दूर is से, देव very दुर्लभ, difficult to get even लेकिन to क्योंकि तुम demigods. मेरी शरण में आई हो But और कहा because कि you हे have कृपामयी देवी, तुम मेरी शरण में आई हो, come to my shelter, इसलिए मैं तुम्हें एक सरल so उपाय बताऊंगी। I will let you know उस a very उपाय को करने simple से way, नंद नंदन तुम्हारे वश में हो जाएंगे, and by that श्याम सुंदर the कृष्ण तुम्हारे son वश of में हो Nand जाएंगे Maharaj यदि तुम ये will उपाय करोगे। be totally controlled by you. लड़कियों ने कहा बताइए हमको क्या So the उपाय girls करना है। asked, "What बोले are we तुम्हें supposed to व्रत do?" लेना है। And she बोले हम तो said सोमवार that you करते need हैं, to मंगलवार fast. लेते हैं, जया पार्वती व्रत रखते हैं, गुरुवार भी करते So हैं, शुक्रवार I भी said कर that लेते हैं, we शनिवार भी कर fast on लेते हैं। Monday, Tuesday, राधा रानी ने कहा ये कोई व्रत करने की जरूरत Thursday, नहीं है। Friday, Saturday. श्याम So सुंदर नंद नंदन कृष्ण को प्राप्त she said करने that के लिए there is no need to केवल एक ही fast व्रत so है, much, but only one fast is एकादशी enough, व्रत। and that is the स्वयं राधा रानी ने fasting इसका on निर्माण किया। Ekadashi day. And this is the fast that even 7 दिन Radhika 24 Rani एकादशी होती है और अधिक recommends मास में 2 and एकादशी है, does. तो कुल मिलाकर 24 So, और 2 26 एकादशी का so यदि कोई पालन करता है if we तो श्याम fast सुंदर on उसके वश में हो 26 जाता है। Ekadashis in the year, सारे then करके कहते हैं आप Shyam मुझे Sundar बता दीजिए will कि ये be एकादशी कब कब आती है और इस एकादशी की महिमा, इसका controlled by महत्व us. क्या है। So they asked, "What श्रीमती are राधा the रानी names कहती and हैं when Ekadashi कि ये comes?" एकादशी शुरू होती है मार्गशीर्ष मास के So कृष्ण she पक्ष says से। that it starts from the मार्गशीर्ष मास का Markshish जो month हमारा वैदिक कैलेंडर and के Shukla अनुसार Paksh in the Vedic मार्गशीर्ष महीना calendar. प्रथम महीना माना जाता है। So that is the first तो month, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी है उत्पन्न एकादशी, and that is called दूसरी है Uttanna मोक्षदा Ekadashi, एकादशी, then तीसरी है Mokshada सफला Ekadashi, एकादशी, then Safala चौथी है Ekadashi, पुत्रदा एकादशी, Putrada पांचवी Ekadashi, जो आज है fifth, षटतिला the एकादशी, one that is today is छठी है जया Shat Tila एकादशी, Jikadi, सातवीं sixth is विजया एकादशी, आठवीं आम्रफल Vijaya एकादशी, Ekadashi, then Amlika नौवीं है पाप Ekadashi, मोचनी then एकादशी, Papmochini Ekadashi, 10वीं है कामदा 10th एकादशी, is Kamada Ekadashi, 11वीं है वरुत्थिनी एकादशी, then Varuthani Ekadashi, 12वीं मोहिनी, Mohini 13वीं Ekadashi, अपरा एकादशी, then Apara 14वीं Ekadashi, पांडव एकादशी जिसे then निर्जला Pandava एकादशी, Ekadashi, that is Nirjala Ekadashi that 15वीं we योगिनी follow, एकादशी, then Yogini 16वीं Ekadashi is the 15th, शिवशयनी एकादशी, 16th is Deva 17वीं Shayani, कामिनी एकादशी, then 18वीं पवित्र एकादशी, then Pavitra 19वीं Ekadashi, अजा 19th एकादशी Aja और Ekadashi, 20वीं and the पद्म 20th एकादशी is Padma और Ekadashi, 21वीं इंदिरा एकादशी, 21st is Indira 22वीं Ekadashi, पाप अंकुश 22nd एकादशी, is Pap Ankusha 23वीं रमा Ekadashi, एकादशी 23rd और Rama Ekadashi, 24वीं and प्रबोधिनी एकादशी। बिना नाम 24th लिए is बताओ Prabodhini Ekadashi. I'm not इस seeing प्रकार से from anywhere and 24 telling you all. एकादशी होती So है। in this way, आप लोग there are कहोगे ये 24 कैसे, Ekadashis. जिसको पालन करना है वो सुनेगा। So you'll say पहले that why we have to एकादशी listen त्याग this करें और to फिर person who follow. इसका और इसकी कथा। They need to understand it and यद्यपि listen it. राधा रानी ने ये 24 एकादशी और So अधिक मास में 2 एकादशी होती and the है, इस two दोनों Ekadashis एकादशी of का Adhik एक नाम Maas, है सर्व and which is called, सर्व both are called संप्रदा, Sarva सर्व Samprada संप्रदा Ekadashi. एकादशी। तो इस प्रकार से 24 और 26। So in this way, there श्रीमती are राधा रानी 26 ने Ekadashis एक that we should एकादशी follow. की महिमा बताई। And then she अब वो कथा तो tells 1 महीने तक कथा करेंगे फिर भी समाप्त नहीं होगी, लेकिन the मनुष्य glories ऐसा of है each कि Ekadashi. 2-3 So कथा for that, एकादशी के we ऊपर will करेंगे, have जिसमें ये we'll have to सारी have two, three एकादशियों की kathas महिमा about श्रीमती राधा रानी singing the glories of all the और Ekadashis व्यास that मुनि ने लिखी, अनेकों were जगह mentioned by प्रकाशित की Radhika गई। Rani and Vyasmuni in Padma Puran ओवरऑल has also एकादशी की mentioned. तो महिमा है, So overall, लेकिन प्रत्येक महीने में जो जो Ekadashi एकादशी आती है, is सारी glorious, एकादशियों की अपनी अपनी कथा और but अपनी अपनी
all these Ekadashis have their own different pastimes and they all have their own individual glories. And the girls started fasting for Ekadashi, and after following that, the girls who came from Ushnar Desh were able to participate in the Rasa Leela, which is the highest of the pastimes of the Lord, and they were able to enter that just by following the Ekadashis. So I always ask that who are the sons of Bhakti Maharani? So the sons of Bhakti Maharani are Gyan and Vairagya, that is knowledge. uh, And what is the place where they reside? It's in south. And what is the vehicle? It's humility, that is Vinamrita. If we ask that the Bhakti Maharani or the bhakti that we want to do, the pure devotional service that we want to do, who is the mother of this pure devotional service towards the Lord, that is Bhakti. And the mother of Bhakti is Ekadashi. The Madhav Tithi is the mother of Bhakti or pure devotional service towards the Lord. So such Shatila Ekadashi is today in US and we following that and we are listening to this pious Bhagvatam Katha. So let's take shelter at the lotus feet of Shankaracharya Prabhu and where he is glorifying Yamuna Maharani. कलिंद गिरिमस्तके पतदमंद पुरोज्वला विलास गमनोल्लसत् प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गतिदंतुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्द रतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता। एक माता जी का प्रश्न है। One Mataji has asked a question. चश्मा पहन के प्रश्न पूछा है। She's wearing goggles and she's asked a question. The question is very nice and this question is very relevant for today. She asks, her name is Khushi. So she is asking that can we have medicine while fasting for Ekadashi? So in Mahabharat, written by Vedvyas Muni, and he writes the glories of Ekadashi, and under that he writes that on the day of Ekadashi, if your body is in distress or you're on the deathbed, in that situation, you can take the medicine. So if it's not necessary, then you can avoid for one day. But if your body is in danger, then you can have or use the medicine or aushadhi. So you can take panchagavya, fruits, water, and medicine. You can take. We should not be so much persistent that even if we are suffering or we are not well, we don't take medicine. We should be practical, and Vedvyas ji is quite practical.
So he says that we can take medicine. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा यदि कोई निर्जला एकादशी And करता हो he says that तो if somebody निर्जला के दिन is भगवान के चरणों में doing चढ़ाया हुआ fasting चरणामृत ले सकता without है water, then निर्जला के दिन they can चरणामृत take चरणामृत मतलब वो हाथ में जितना आता है the कुछ water लोग कहेंगे that is चरणामृत मैं offered तो to आधा लीटर Krishna, भी जाऊंगा that is लेकिन Charnamrit, but निर्जला that के should दिन be नहीं only about नहीं वो हाथ में the चरणामृत ले सकता handful, no, not खुशी a जी half बहुत liter of बातें कर water. चुकी हैं इसका उत्तर मिल गया आइए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य So, Mahaprabhu Vallabhacharya ji, इस यमुनाष्टकम के दूसरे श्लोक में कहते in हैं the second verse of this Yamuna Ashtakam, writes एक्चुअली ये beautifully. श्लोक का निर्माण कब हुआ किसी So, ने महाप्रभु को पूछा when was कि this आपने verse कल written? आपने जैसे सुना It ना was asked नमामि by him. यमुना महम So, yesterday, as we कृष्ण were भक्त discussing the verse 1, बोले आप यमुना जी की महिमा गाते हो he, he was asked that लेकिन you are जिस singing the glories प्रकार of से Yamuna यमुना नदी Maharani, है but the वैसे वैसे way दुनिया में Yamuna बहुत सारी Maharani नदियां is, हैं there are so many other तो rivers दुनिया like की that. नदियों में और यमुना नदी में क्या अंतर So, है and what is the difference जब between इस प्रकार का प्रश्न महाप्रभु Yamuna श्री ji and वल्लभाचार्य को other पूछा rivers? गया So, when तो this kind उन्होंने of इस question श्लोक was का asked, निर्माण कर दिया कि then दुनिया की नदियों के Vallabhacharya ji स्रोत सोर्स कुछ अलग हैं लेकिन यमुना का सोर्स answered that कलिंद गिरी the मस्तक है source for कौन सा other पर्वत है rivers is different, कलिंद but गिरी मस्तक है यमुना जो for है Yamuna ji, कलिंद the गिरी गिरी source माने is पर्वत the और उस Kalinti पर्वत का नाम mountain, कलिंद तो कलिंद पर्वत के मस्तक से पतत and पतत पतत माने she गिर रही है starts from कलिंद गिरी the मस्तक head है of the पतत माने Kalindi पर्वत जो है mountains. अब इस लाइन को ही मैं थोड़ा सा विस्तार करूं So, if और I हम जिस elaborate पॉइंट this पर आज का first प्रवचन line, करेंगे कलिंद गिरी मस्तके यमुना महारानी के पिता कौन so कलिंद who is the father of कलिंद Yamuna Maharani? जैसे It's पूछा जाए Kalint पार्वती के पिता mountain. As हिमगिरी Parvati ji's हिमालय father तो is यमुना Himgiri महारानी or का Himalaya कलिंद गिरी mountain. लेकिन यमुना महारानी का ये दूसरा जन्म कलिंद पर्वत के रूप में हुआ So this is the second birth यमुना of महारानी Kalindi कलिंद में Maharani or जन्मी Yamuna उनका ji. आध्यात्मिक जन्म आइए हम So, प्रारंभ से पहले से ही शुरू करते हैं so let's इससे थोड़ा start सा from the beginning. हमें समझ में आएगा Then we will महाप्रभु be जी able का to understand स्वरूप this किस verse. प्रकार से So let यमुना me share the महारानी का pastime. प्राकट्य होता है कलिंद How गिरी मस्तके इस लाइन Yamuna में कलिंद Maharani क्यों हो रहा manifested. है So we are talking about Kalindi जैसे Mastak भगवान श्री here. कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है As आप Krishna सब जानते जगत विदित कृष्ण को गाय बहुत loves प्रिय है the cows, जब they are गैया को his चराने beloved, जाते हैं तो कृष्ण जूता and भी when नहीं he पहनते goes to gaze जैसे them, कृष्ण को he गौ doesn't माता even wear प्रिय है वैसे shoes. ही कृष्ण को यमुना नदी प्रिय है वैसे कृष्ण को Similarly, यमुना महारानी प्रिय Krishna है loves or राधा और is, माधव के प्रेम का loves Yamuna Maharani. घनीभूत स्वरूप गिरिराज गोवर्धन है So राधा और माधव the राधा और कृष्ण श्याम सुंदर के Radha प्रेम and का Krishna's घनीभूत love. थोड़ा सा शब्द में इजी करूं राधा और कृष्ण के प्रेम को राधा और कृष्ण का जो प्रेम है So उसको the परमाणु love का आकार यदि दिया जाए that is तो राधा manifested between गोवर्धन Radha and Krishna, if it's given the और form राधा of a माधव राधा और stone, कृष्ण के प्रेम को then it यदि is जल का आकार Giridhar, दिया जाए द्रवीभूत Giridhar स्वरूप जो है mountain. वो यमुना महारानी And है राधा और if कृष्ण के प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना the महारानी water form of the liquid भगवान form के of धाम गौलोक वृंदावन ये दोनों Radharani जगह and बहुत सुंदर Krishna's स्थान love है is जहाँ भगवान श्री Yamuna कृष्ण Maharani or नित्य लीला Kalindi करते Devi. हैं गोलोक And वृंदावन that में is नित्य विहार not करते of हैं this material world, but in उस the spiritual world. निकुंज में So, in the eternal राधा और abode of कृष्ण the Lord, उपस्थित थे और when लीला में Radha कुछ and Krishna कमी were महसूस हो रही थी और उसी समय भगवान in the श्री कृष्ण के pastime हृदय से and they यमुना were महारानी का feeling some प्राकट्य हुआ deficiency, and then from the भक्ति के heart of सिद्धांत से Lord यमुना Krishna, महारानी Yamuna Maharani जो भगवान manifested. श्री कृष्ण के हार्ट हृदय से प्रकट हुई है So she उस manifested सिद्धांत के from अनुसार Krishna's यमुना heart. महारानी
So according to that philosophy, she यमुना is महारानी स्वयं भगवान भी है a और manifestation of भगवान the का Lord भक्त भी Himself. है। So she जैसे is गिरिराज गोवर्धन की महिमा Bhagwan सुनते or the हैं Lord कि her दास करके Himself, and भंताम she भवनिम is प्राह a devotee दास as कृत। well. जैसे गिरिराज गोवर्धन भगवत स्वरूप भी है, स्वयं As भगवान भी है, Giriraj और गिरिराज गोवर्धन भगवान is के भक्त भी है। the Lord as ठीक well इसी as प्रकार the devotee of यमुना the Lord. महारानी, Similarly, क्योंकि Yamuna वो Maharani, हृदय का ही टुकड़ा है भगवान के as हृदय she में is से the कोई द्रवीभूत रूप से प्रकट हुई, liquid इसलिए form भगवान of भी है His और heart, भगवान की भक्ता भी है। so she is the यदि Lord हम यमुना को Himself भक्त as well as कंसीडर करें a devotee. So if we तो consider गंगा her भी as a भगवान की भक्त devotee, है, then यमुना Ganga भी ji is भगवान की भक्त also है। devotee of the Lord and Yamuna ji परंतु is क्या also है, the devotee of the Lord. गंगा भगवान So के the difference चरणों से between them प्रकट is हुई that और Ganga ji यमुना भगवान manifested के from the हृदय lotus से, feet हार्ट of से the प्रकट Lord, हुई। while Yamuna ji manifested from the मतलब heart of दोनों the में Lord. कृपा होती है, ध्यान से। So, यमुना महारानी की महिमा ये है। so this is the glory of Yamuna Maharani. गंगा माता, So, गंगा मैया कृष्ण Gang, के चरणों से प्रकट हुई, तो so at the चरणों में lotus कृपा feet होती है, there लेकिन is यमुना हृदय से mercy प्रकट हुई, हृदय or हार्ट में daya. प्रेम होता है। But in the heart, from where गंगा Kalindi भगवान Devi श्री कृष्ण manifested, की कृपा का is स्वरूप है love. और So, यमुना भगवान श्री कृष्ण के Ganga प्रेम ji का is स्वरूप है। the तो symbol of साक्षात राधा Krishna's mercy, राधा and कृष्ण Kalindi Devi is द्रवीभूत the प्रेम symbol स्वरूप of Krishna's ये love. यमुना महारानी है। So, she is the epitome of Krishna Prema ऐसी or यमुना महारानी Krishna's का love. प्राकट्य नित्य निकुंज गोलोक So, वृंदावन में in this श्री manner, कृष्ण के हृदय से Yamuna Maharani manifested और in the eternal नदी abode की of तरह the वो Lord, यमुना बहती है। and और आप in कथा the जानते हैं, दूसरे pastimes of श्लोक the इस तरह Lord, के it हैं कि जब flows. कृष्ण को इस धरती पर आना हुआ And when Krishna was तो supposed to राधा come गोविंद to ने the तीन material शर्तें world, रखी। then Radhika क्या शर्तें Mai रखी? कृष्ण put तीन वस्तु condition जब that तक I ऊपर want से नीचे नहीं three आएगी things in मैं the आपके material world, साथ नहीं otherwise रहूंगी। I will not come to the यत्र material world with वृंदावनम you. नास्ति So the तत्र first का one, the मतलब है Vrindavan. यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में न मनः सुखः। कृष्ण यदि वृंदावन So she गोवर्धन said that यमुना धरती if पर नहीं आएगी if तो मैं आपके साथ नहीं Govardhan रहूंगा, ji, Yamuna मतलब ji, आपके साथ and नहीं रहूंगा। Vrindavan are not there in this material world, I will इसलिए not go down भगवान श्री with you. कृष्ण ने I will not accompany लीलाओं you. को धरती पर उतारा, So गिरिराज Lord गोवर्धन को Krishna धरती पर उतारा और यमुना put माता को धरती पर उतारा। everything तो ये तो हुआ down in the कृष्ण के material हृदय में world. यमुना महारानी का प्राकट्य, So यमुना this is महारानी का the स्वरूप how जो भगवान Kalindi के Devi हृदय or से Yamuna प्रकट Maharani हुई। manifested in the eternal abode of the गंगा Lord. कृपा करती है, दया करती है, और क्योंकि So यमुना भगवान के Ganga हृदय से निकली ji है इसलिए वो is प्रेम प्रदान merciful, करती है। but यदि Yamuna भगवान ji की कृपा हो जाए तो provides हमें or भगवान का bestows तत्काल तुरंत Krishna प्रेम Prem. प्राप्त हो If जाता she है। bestows her mercy, then we can तो इस have प्रकार से the यमुना love महारानी of the का Supreme प्राकट्य Personality हम of लोगों को Godhead, हुआ। Lord Shri इस Krishna. धरती पर कैसे प्राकट्य हुआ, आज की कथा So, ध्यान से सुननी होगी, so how she manifested in the material कान world? भी खुली रखनी So होगी, क्योंकि you need to पुराणों की कथा listen है। very carefully because this pastime पुराणों is में fetched from the अपने घर पर Puranas. फर्नीचर या सब कुछ बनाते हैं So when we तो घर में usually make मिस्त्री को furniture बुलाते at हैं। home, we call a carpenter. देवताओं को जब अपने घर पर फर्नीचर करना होता है, When कुछ demigods अपने have घर to पर get घर को their सजाना homes होता है, furnished or they want to तो उनके decorate their पास एक ही homes, मिस्त्री है, so they have only देवों one का मिस्त्री, और उनका नाम है carpenter, and विश्वकर्मा। his name is Vishwakarma. तो देवताओं के मिस्त्री विश्वकर्मा, उस विश्वकर्मा की एक बेटी हुई, So उस विश्वकर्मा Vishwakarma's की एक daughter कन्या हुई had जिसका one नाम था daughter. संज्ञा। Her name was Sangya. संज्ञा। Sangya. तो देव 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 समाज के मिस्त्री विश्वकर्मा की एक बेटी हुई जिसका नाम था संज्ञा। उस संज्ञा के विषय में पुराणों में लिखा है And it's mentioned about बहुत her सुंदर, in उस Puranas संज्ञा की that बेटी हुई बहुत that सुंदर this और daughter बहुत Sangya शक्तिमान, was very beautiful सर्वगुण and संपन्न, सारे गुण संज्ञा perfect. में थे She had all the और great बहुत ही qualities सुंदर। and she was अब extremely beautiful. इस संज्ञा को जब 16 साल की हुई When she तो was इसका विवाह 16 किसके साथ year होता है? old, ये so they were विश्वकर्मा को
thinking that how, to whom we should marry her. So he was anxious, and to get the answer, he started meditating and following austerity. As Brahmaji is the mm, creator, so he started meditating on Brahmaji. And he said, when Brahmaji manifested, he asked that I have a question, that my beautiful daughter Sangya, whom should she be married to? Brahmaji replied that there is only one person who is eligible to marry her, and that is the sun god Bhaskar. And he married his daughter to Sun. And after their marriage, they got twins, one girl and one boy. So the boy was Yam, and the girl was called Yummy. So, or we can say Yamuna as well. So they got twins. Yam was the boy, and the girl was Yamuna. So now, after having the kids, s- his wife Sangya could not tolerate the heat of the sun god. We are so far off from sun, but yet in summers we get so much distressed by the heat of the sun. and and his wife was living with him, how much distress she might be. So on behest of her father and Kashyap Muni, she married and she got the kids, but now she could not tolerate the heat of sun god. So she got so much affected by the heat that she was so fair, but she turned into blackish complexion. And the boy and the girl were also born of the blackish complexion. If you see that in 16,108, all of them are fair. Only exception is Yamuna Maharani. And in the demigods, Yamraj is extremely black. And the reason is that she got literally burnt and she turned black, and the kids also became black. And now it became unbearable for her. And she bowed down at the feet of her husband, son, and came back to her father's home, Vishwakarma's home. She came back to her father's home. The father said, "Do you hear?" So she said that I have left him for good. That he is so much. I cannot sit beside him and see how my complexion has changed. So Vishwakarma said that the sun is such is at the such higher position, and everybody respects him and offers water to him. And so, so she said that he is might be magnificent, but I cannot stay with him. The father said a very great philosophy. He said that a person who is great
if you have to stay with such a magnificent, benevolent person, then you need to have to suffer some heat, then we should adjust. So there is a saying that if the cow is giving milk and then if she kicks, then also we should tolerate that. So that is the sign of intelligence and wisdom. But she didn't understood that, and she stayed with her father. At that time, Vishwakarma ji called his son-in-law, that is sun god, and he came. And Vishwakarma ji said that my daughter is worried and cannot stay with you. So Surya is magnificent, and he said that if you wish, I can lessen my heat, but but let me tell you that it's more of psychological rather than physical distress, and because of that she has returned to you. So Suryadev was also considering that I will lessen my heat, but Sangya was persistent that no, I don't want to leave, and so she said that I want to stay with you. So the Vishwakarma, the father said that it's your duty to live with your husband, and if you don't want to stay with your husband, then you cannot stay with me as well. So Sangya had no option. She didn't wanted to go back to her husband, and the father didn't wanted to keep her. So she went to kill herself. She went, and in the way Narad Muni arrives, and when Narad Muni arrives in any pastime, the whole story changes. So, so for women, there are only two options: the husband or the father's abode. So she was going to kill herself, and Narad Muni asked that, "What are you doing?" So she said that I want to die. She said that you got such a beautiful human life. It is the greatest fortune to have a body of a human, which is even not easily available to demigods, and you want to get rid of this body. And he said that you should also consider that you have two kids, Yam and Yamuna. So she said that I am distressed because of the heat of my husband. Then Narad Muni said that there is always a solution to any problem. Then, if there is a problem, then I tell you or suggest that you should pray to Lord Narayana or Krishna, and he will fulfill all your desires, and he will give you a perfect solution. So she said that, okay, let me try. So now this Sangya, the daughter of Vishwakarma, started performing austerity. So if I connect another Puran, once Vishnuji had a, fought a great battle among demigods and demons, and at that time Vishnuji had to work hard. Although the Lord
can करते हैं never be वो tired, देह के धर्म भी निभाते हैं, but जैसे still भूख लगना, he नींद आना, ये follows शरीर when he के comes to धर्म this होते हैं। material ये world. कभी भगवान को He, लागू नहीं होते, लेकिन although they भगवान इतने don't मतलब apply to निर्दय him, है कि but भाई yet मैं देह में आया हूँ, he मैं इस he संसार में follows आया हूँ, his own तो इस principles, संसार के देह के धर्म को भी निभाऊंगा। and he follows the जैसे भगवान rituals पृथ्वी of पर the बैठे bodily और platform. उनके शरीर से पसीने की बूंद गिरी और And वह पसीने की because बूंद of his sadness, he संज्ञा was जहाँ sweating, तपस्या कर रही थी, and the भगवान place where नारायण की उपासना कर रहे Sangya थे, was उसी meditating के or doing पैरों के नीचे austerity, there संज्ञा के this कीर्त drop हुई fell. और उसी समय उन्हें भगवान नारायण का दर्शन हुआ। And at the same point of संज्ञा time, भगवान नारायण she के चरणों में saw गिरी, Lord बोले Narayan, प्रभु आप मेरा and उद्धार she कीजिए। भगवान नारायण ने कहा संज्ञा bowed तुम्हें down at जो his चाहिए वो lotus feet. मांगो। And अब इसके मन में तो एक ही भ्रम, he asked बोले that मेरे पति का you तेज can कम कर ask दो। whatever you wish. So भगवान she नारायण said ने that देखा please कि प्रभु reduce the सूर्य की heat तरह of तेजवान बनना चाहते हैं, my husband. तेरा So पति he तो said इतना that तेजवान है तो तू उसको that कम करना चाहती है, तो people क्या ही होता है। pray जिसके that पति में कोई तेज नहीं होता तो पत्नी कहती थोड़ा तेजवान बनो, थोड़ा our तेजवान बनो। husbands इधर जिसके should be पति like तेजवान है sun. वो कहती तेज But कम now, करो, तेज कम करो। so that is the भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने कहा कि देखो confusion in human life, that तुम सूर्य whatever we get, we're को never कम करना satisfied. चाहती हो, अपने So निजी he said स्वार्थ that के लिए for your तुम इस own जगत की personal बर्बादी benefit, करोगी, you इस want to संसार ruin को this परेशान करोगी। material world. इतना भी स्वार्थी किसी को नहीं होना चाहिए। You should not be that much सूर्य देव का selfish. तेज कम मत कराओ। So you should तो not संज्ञा ने कहा ask to आप reduce the सूर्य देव heat का of तेज कम sun. नहीं कर सकते, कोई So she बात said नहीं, that okay, पर if you मैं cannot सूर्य देव do का that, तेज सहन कर सकूं ऐसी शक्ति then मुझे दे दो। please give me such a सूर्य benediction that I सारा can जगत का tolerate his तेज सहन heat करूं ऐसी and I शक्ति can दे दो। stay with ये हो him. सकता है। So Lord भगवान ने Narayana कहा said that yeah, this is ये हो possible, सकता है, लेकिन यह करने के लिए देवी but for तुम्हें that यह शरीर त्यागना होगा, क्योंकि you प्रॉब्लम need शरीर to की है। get rid of this तुम्हें ये body, शरीर त्यागना होगा, तुम्हें दूसरा जन्म जो मिलेगा and उससे तुम you will get सूर्य another का birth तेज सहन where करोगे। you would be able to tolerate the और heat of उसी the समय sun. भगवान के चरणों में भगवान And, नारायण का नाम लेते हुए and that time, भगवान नारायण का at the स्मरण same करते moment, हुए in विश्वकर्मा की कन्या remembering संज्ञा ने अपना प्राण Krishna's त्याग दिया name or Vishnu's और name, संज्ञा she का died at दूसरा his जन्म lotus feet, हुआ and his छाया के second रूप में। birth was किस रूप में? as छाया Chaya के रूप में। Devi. और जब छाया के रूप में जन्म हुआ तब And when she सूर्य was देव के born as साथ Chaya उनका Devi, विवाह and then she सूर्य देव got के married साथ to रहने लगी। Suryadev, अब and कंफर्टेबल she है started staying संज्ञा with के रूप में Suryadev, and now कंफर्टेबल, she is लेकिन छाया के comfortable. रूप में कंफर्टेबल। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई? सूर्य But और now छाया का विवाह हुआ the और problem was सूर्य that और they छाया both से got एक पुत्र married हुआ and they got one और उस पुत्र son, का नाम हुआ शनि देव। and his name was Shani Dev, शनि देवता का जन्म हुआ। अब छाया का the एक पुत्र Saturn शनि देव demigod. और ऑलरेडी दो बेटे, दो संतान So यम और यमुना थी। they already had two लेकिन अब kids, छाया Yamuna को ji ये and स्वाभाविक है कि अपने Yam, बेटे शनि को and खिलाना पिलाना Saturn god, पढ़ाना that is लिखाना Shani. बहुत अच्छे से। So she used to वो take यम care और of यमुना का कतः ध्यान नहीं रखती थी। इवन यम और यमुना को वो Shani डांटती थी। Mara कभी कभी ऐसा समय आ very सकता carefully. She कि used to यम और feed यमुना को ये and take छाया care, मारती भी थी। and she used to abuse Yam अपने and सौतन Yamuna ji बेटे होने के कारण, because they were सौतेला होने के कारण छाया not के द्वारा यम और her यमुना own को बहुत son परेशान and daughter. करने लगी, बहुत So she उनको started दुख giving देने लगी। अब distress दोनों and बच्चे anxiety to the बढ़ रहे kids. हैं, So they both were tolerating this एक दिन distress, but there is a बस limit नहीं रहा गया to और दोनों भाई बहन एकांत में बैठे हैं। have यमुना ने or भैया suffer. से कहा भैया हमारी So क्या गलती है, one day she said, हमने किसी का asked क्या her बिगाड़ा। brother that what wrong और we ये have नई done, माँ that this हमको रोज new मारती mother, है, हमें रोज मारती she है। always scolds us मैं and गहलोक से abuses us. यहाँ पर आई हूँ I धरती पर came कृष्ण from की the सेवा करने के eternal लिए, abode of the उनकी Lord सेवा के to लिए। serve the और यहाँ Lord, माता छाया का and इतना here उत्पात है our mother कि यहाँ हमारी Chaya सेवा संभव नहीं है। is distressing भैया मैं
me so much that I cannot serve the Lord from here. So she said that I don't want to stay here. Even Yamraj said that I don't want to stay. So Yamuna and Yamraj, so they left Shani Maharaj's son and Chaya Devi, and they both went in different directions. And they both started austerity or meditation. So Yamraj went the direction and he started austerity, and he got benediction from Brahmaji. He Brahmaji asked, "What benediction you want?" He said that I have nothing, as I have left my father's home. So Brahmaji said that I am happy with your austerity, and I give you the position of the king of righteousness or Dharmaraj, and I make you the king of the hellish planet, and you will stay in two forms. For so the people who break the laws of material world and who don't follow the rules made by the Lord, you will punish them in the hellish planet hell, and other form will be as the king of justice of righteousness, and you will take care of the devotees with love. So here is one important principle, that Yamraj has two forms. One is Saumya Swarup and the other is Ugra Swarup. So those who do pure devotional service towards the Lord, towards them, he is Saumya or very comfortable. But people who don't follow the laws of the nature and who don't do the pure devotional service towards the Lord, for them, Yamraj is fearful and he punishes them. And on the other hand, Yamunaji started austerity or meditating at the top of the Kalindi mountain. So I have gone quite a few times at Yamunotri. So in Uttarakhand, there are four holy places: Yamunotri, Gangotri, Badrikash. And above Yamunotri, from where Yamunaji starts, there is the Kalindi mountain. So if we have so much facility and still we face so much trouble to reach Yamunotri, people who cannot travel, they take a ride, and the going on the horse is more dangerous because you can सो ये ये तप भूमि है so और this is the land of austerity. की कथा हो रही है So now that we're discussing this pastime of Yamuna Maharani, and in summer there is a Katha in Haridwar. So I'm thinking that we should go to Yamunotri as well with all of you. Anyways, we are going to Haridwar. So from there, so, so now it's become very easy. So let's take a pledge that that we should go to the place where Yamunaji manifested, and all those devotees in Zoom, we will show them the Yamunotri from there.
सो कलिंद गिरी मस्तके, यमुना महारानी कलिंद पर्वत के ऊपर जाकर अद्भुत तपस्या करने लगी। कैसी So तपस्या? at the top of Kalindi mountain, she started the austerity. Now that we are going to Kalindi mountain or Yamunotri, so there is a kunda that is called Tapta Kund, which is surrounded by ice mountains, but that kund is filled with hot water, warm water, and if you put rice, then the rice gets cooked. So this Tapta Kund is the symbol of Kalindi or Yamuna ji's austerity, as she was filled with sadness and her heart was filled with heat and distress. So that is why this kund is hot, filled with hot water. And the only goal she had was to serve the Lord. So, so she didn't had the ill treatment she was met by her mother. But at the time when she was meditating or doing austerity, it was not to destroy anyone, but she was doing it in a positive manner to get the pure devotional service of the Lord, that is bhakti. So the mountain started melting, and the mellow of separation was increasing, and she was feeling distressed. And the ice started to melt from the mountains, and and in this form, the liquid form, Yamunaji started manifested. So that like she started from the top of the Kalindi mountain, and then that is why so speak with me, Yamuna Utri, Yamuna Utri, Yamuna Utri, Yamuna Utri. Yeah. So so this word Yamunotri came from Yamuna Utri, means Yamunotri. So this is the place where Yamunaji manifested or came down. And that is why this place is called Yamunotri. And then she proceeded towards Uttarakhand, then Yamunanagar, then Panipat, then Delhi, and then to Mathura. And the Acharyas have beautifully written, श्याम सुंदर की प्यारी यमुना, श्याम सुंदर की प्यारी, कृष्ण मिलन को व्याकुल धाई, कृष्ण मिलन को व्याकुल धाई, बहेती रही सदाई, श्याम सुंदर की प्यार, मथुरा श्री विश्राम घाट में, मथुरा श्री विश्राम घाट में, मिलो विश्राम भारी, मिलो विश्राम भारी। श्याम सुंदर की प्यारी यमुना, so the beloved of Shyam Sundar, Krishna, is anxious to meet him. And she melted
And then she flew और दिल्ली से होते हुए and मथुरा reached पहुंची। finally to मथुरा Mathura. में विश्राम घाट में And there यमुना ने at विश्राम किया। Vishram Ghat, she took अब rest. हमारे मथुरा में बड़ा फेमस है विश्राम घाट। So in Mathura, इसका Vishram Ghat is नाम quite विश्राम घाट famous. क्यों है? And इसके why पीछे is it 5 कारण called है। Vishram Ghat? There are 5 reasons for सतयुग में that. In भगवान Satyuga, वराह देव ने Bhagwan हिरण्याक्ष का Varahadev, वध करके after killing कितना देरी किया उस Hiranyaksh, आदमी को मारने में। सो भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध करके when he इस killed घाट पर Hiranyaksh विश्राम किया demon, था। he rested at अभी this जब यहाँ place. भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, And at the after कल the birth आपने of देखा Lord Shri कि श्री Krishna, वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर चल रहे थे when गोकुल जाने के लिए, when तो Vasudev उस ji समय started वसुदेव जी ने इस for घाट पर Gokul, विश्राम किया था। so at this place इसलिए इस Vasudev घाट ji पर took किया था rest विश्राम। here. भगवान वराह That is ने why विश्राम किया, also it is वसुदेव called जी ने Vishram विश्राम Ghat. किया। कुबल्या पीड़ हाथी, चाणूर, मुष्टिक और अंत में कंस को मारकर And after भगवान killing श्री कृष्ण all ने these यहाँ पर demons विश्राम in किया, Mathura, even इसलिए Lord इस घाट Krishna का took नाम rest विश्राम here. घाट And है। that is why this और place is दोस्तों, called Vishram श्री Ghat. चैतन्य महाप्रभु And जब Chaitanya 500 वर्ष Mahaprabhu, पूर्व श्री just चैतन्य 550 महाप्रभु जब years ब्रज में back, आए तो when सीधे he ब्रज came में to नहीं आए। Vraj, he didn't श्री go चैतन्य to Vraj महाप्रभु straight हाथरस से away. होते हुए, हमारी He रेशु माता जो है ना हाथरस he से है, came via सो Hathras. हाथरस Our होते Reshu हुए Mataji is from there. मथुरा से विश्राम घाट में महाप्रभु सबसे पहले विश्राम घाट पहुंचे And he और reached विश्राम Vishram घाट Ghat में उन्होंने first. विश्राम किया And he took rest और फिर there. श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज की ओर आ गए। And then he तो श्री proceeded चैतन्य towards महाप्रभु ने Braj यहाँ पर Vrindavan. विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम। और पांचवा कारण, And the जब fifth यमुना reason, इस धरती पर when उतरी Yamuna ji manifested on this in सारे this material साम्राज्यों world, को पार करते हुए and when she मथुरा में crossed पहुंची, all these तो places, सबसे पहला विश्राम so the first यमुना place ने where इस she घाट took पर rest was विश्राम at किया। this ghat. इसलिए आचार्यगण कहते हैं, That is the मथुरा reason. श्री विश्राम घाट में मिलो विश्राम भारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी। तो इस प्रकार से यमुना श्याम सुंदर की प्यारी बन गई। So this is how जब she यमुना became the महारानी beloved आती, of Lord Shri दोस्तों अब Krishna. देखो एक मैं आपको एक रहस्य की बात कह रहा हूँ। So now let me share a यमुना महारानी आ गई मथुरा में, confidential ठीक है। knowledge with you. अब वैसे देखा जाए तो मथुरा से यमुना आगे चलती है कानपुर, So Shamuna ji कानपुर से आगे came to चलती है, Mathura, and after that फिर she moves प्रयागराज, to Kanpur प्रयागराज and से वहां मिल Allahabad. जाती है And at यमुना से। Prayagraj she प्रयाग से आगे meets तो फिर गंगा उसे लेकर with चलती है, Ganga ji, बाकी and यमुना after केवल that प्रयाग तक बहती है। लेकिन हमारे she भारत mixes with वर्ष Ganga के ji. संतों ने But यमुना का डेस्टिनेशन our, वृंदावन ही माना है। our saints have यमुना महारानी that कलिंद the पर्वत से उतरी final तो वो destination मथुरा तक, of मथुरा के अंदर Yamuna जो ji यमुना is का to स्वरूप Mathura, है वो and उनका the आदि other भौतिक स्वरूप है, form बाकी of यमुना का Yamuna ji वास्तविक स्वरूप is तो केवल मथुरा तक Adi सीमित है, Bhautik Swarup. The मथुरा तक original सीमित है। form of Yamuna ji is और दूसरी in बात, जब ब्रह्मा Mathura. जी से वरदान प्राप्त करके यमराज धर्मराज बन गए, यमलोक When के राजा बन गए, Brahma, तो यमराज जी after अपने taking मन में getting विचार benediction किए from कि भाई मैं तो राजा Brahma बन ji गया, मुझे रहने का and he स्थान became मिल the गया, king, घर बार वाला he आदमी हो गया, started looking मेरी for बहन कहाँ पर है? his तो यमराज जी sister. अपनी बहन को खोजते खोजते So खोजते he was in जब search of कलिंद पर्वत पर Yamuna पहुंचे, ji, and तो he कलिंद reached पर्वत से देखा कि ये तो Kalind ये तो mountain, प्रवाही द्रव के रूप में बह रही है। तो and he कलिंद saw that पर्वत से she उस पर्वत was से होते होते in होते the liquid यमराज जी forम, मथुरा पहुंचे। and he reached Mathura और जब यमराज जी following मथुरा पहुंचे और the path उन्होंने of यमुना Yamuna को ji. देखा, और भाई और बहन का आज And हजारों वर्षों के बाद मिलन after हुआ, thousands of years, now they have दोनों finally भाई बहन एक met. दूसरे के गले मिले So they और both दोनों के आंखों से embraced जल each जल other, कर and they अश्रु की both धारा were बहने लगी। crying vehemently. और भक्तों, ये अब देव योग से जिस दिन And यमुना by यमुना का Krishna's मिलन हुआ mercy, विश्राम on घाट the पर, day उस दिन भाई these दूज two है। met on Vishram दिवाली Ghat, के बाद that होता है day ना, दिवाली was के बाद Bhai क्या हो Dooj, गया? the भाई दूज, second day भाई after बीज, Diwali. उस दिन भाई बीज थी और भाई बहन दोनों मिले। And they और both यमराज जी met ने कहा there. कि बहन अब तुम And चिंता मत करो, Yamraji said that ब्रह्मा now जी you ने need मुझे not to यमलोक का worry. राजा बना दिया I है, am the तुम king मेरे of साथ में रहो, Yamlok, तुम and आराम you से can रहना, come with me and you can तुम्हें stay कोई with चिंता me नहीं है। comfortably and live there without और any भैया, distress. She said भैया that मैंने हजारों वर्ष जिनके लिए I तप किया
I have done वे भगवान कृष्ण so much अब austerity for प्रकट 1,000 years होने वाले हैं। just अखिल to ब्रह्मांड नायक कृष्ण के प्रकट होने का समय आ रहा है। तो अब have अब कृष्ण association की with the लीला Lord, का अनुभव and करेंगे। now कृष्ण He's की about to लीला मैं manifest. कर लूंगी So भैया, I मुझे want आपके साथ नहीं चलना। to be a मैंने part कहा of His भैया Rasa ये Leela. तो हमारी तरह And आखा भागो माना, यमुना तू ये सब रहने दे, Yamraj ji नदी said दूध में बहेगी, लोग तुम्हें थूकेंगे, कचरा that करेंगे, if you गंदगी करेंगे, और फिर आता माझी सटक ली, मेरी सटक जाएगी तो मैं सबको मारूंगा पीटूंगा, मेरे if दुश्मन if बढ़ाओगे, you flow in the इसलिए water तुम अपनी form, लीला को people बंद will करो और pollute मेरे you. साथ It's इस धरती better में you चलो। come to with me नहीं नहीं to भैया, मुझे यहीं पे Yamlok. रहने दो आप। हाँ, Yamuna ji मैं said that वहां no, जाना I नहीं don't चाहता, want to मैं go anywhere मैं now, यहाँ पर कृष्ण रस का आस्वादन करना and I चाहता want to enjoy the mellows of the हूँ। Lord तब here. यमराज जी ने कहा, Then Yamraji बहन आज told her सौभाग्य से भाई बीज है, that today is Bhai Beej तो or बहन Bhai Dooj. वैसे तो मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, I haven't given लेकिन you लेकिन anything आज throughout जब my मैं life, संपन्न हो चुका हूँ तो but बताओ now that I'm तुम क्या capable, चाहोगे। you can ask for मैंने कहा भैया, any benediction from यमराज me. जी ने What do you अब क्या want? What do बनाया you है, desire? बोले So मुझे यमलोक का राजा, नरक she का said स्वामी, that Brahmaji has made जो you the पाप king करेगा of उसको पीटने का काम मुझे दिया है। hell, and तब it's यमुना my तट duty पर to punish कृपा करुणामयी हृदय, people यमुना ने कहा भैया who इस don't दया में follow यदि कोई the व्यक्ति law of material nature. मुझ यमुना में So स्नान करे, Yamuna ji said that मुझ if यमुना की someone कथा takes a सुने, dip in Yamuna आप ji and उनको नरक में नहीं लेकर listens जाओगे, to ये my वरदान pastime, मुझे दे दीजिए। then you should यमराज जी ने कहा not take तथास्तु, them to चिंता मत करो, Yamlok. तुम्हारी कोई कथा And सुनेगा, तुम में जो Yamraj स्नान करेगा, agreed. यम दर्श ना दिखाए, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। So हाँ I will यमराज को never थोड़ी show सी my दया face करूंगा, to a लेकिन मैं person उसको नरक में नहीं who has भेजूंगा। taken a dip in Yamuna ji भक्तों इस and has प्रकार से listened or heard करुणामयी her हृदय pastime. रूपी है, So जीवन में कितना हूँ that पाप is the किए reason हो, Yamuna ji is कितना so भी merciful अतिक्त that हैं, even if यमराज we को are दर्शन करने के लिए filled भेजा। with sins, and भाई बहन के बीच में but चर्चा चल still ही रही थी, we तभी can शनि देव आए। be absolved शनि of जानते हो, our sins. शनि देव किस And दिन, in the जिस दिन meanwhile, दूसरी माँ के बेटे हुए ना, छाया Shani, के बेटे, और the क्योंकि भाई बीज था Saturn तो demigod, शनि देव also भी came, खोज रहे थे मेरी because बहन as कहाँ, बहन का, it was बोले Bhai बहन Dooj, तो so साल भर he याद न करे, also लेकिन भाई बीज के दिन came in जब search याद of करते Yamuna हैं ji, तो शनि देव भी वहां पर आ गए हैं? in search of और Yamuna ji, शनि देव भी यमुना महारानी से मिले, and और he met there, माता यमुना ने शनि देव and उनको Yamuna भोजन ji किया, भोजन कराया, यमराज जी को भी तिलक भोजन fed कराया। them both, शनि देव ने कहा कि बहन and Shani ji आज asked में हम प्रसन्न हैं, that तुम्हें जो चाहिए मांगो। extremely happy, यमराज so ने you कहा can भैया ask for a कि benediction. मुझ में स्नान करेंगे उसको आप दंड मत देना। शनि देव ने कहा बहन क्या चाहिए, जो चाहिए So मांगो। she asked, what do you desire? यमुना ने कहा शनि And देव तुम Yamuna ji कितने said that जोरदार देवता हो, that, जिसके पीछे पड़ते हो साढ़े सात ही ऐसी लगाते हो that कि साढ़े सात when you साल follow तुम्हारा someone, then पागल परेशान हो the जाता है। person gets fully बोले destroyed जो in seven and a तुम half देना years. चाहते हो So if बता you दो, want to give me बोले something, जो you मेरी promise कथा me सुनेगा, that a person who मुझ में listens स्नान to करेगा, my बोले नहीं, pastime and जो यमुना dips, का आश्रय लेगा, so who तुम takes उन the पर shelter कोई of दृष्टि नहीं Yamuna डालोगे, ji, you will यमुना का never आश्रय look लेगा, at them. तुम उनको नडोगे नहीं, उन पर भारी नहीं होगे। You will never distress them. शनि देवता ने तथास्तु कह दिया। And जिनको Shani, शनि भारी होता they है agreed. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, So if यमुना you're महारानी की कथा suffering, सुन लो, यमुना में then स्नान you करो, should यमुना listen to माता the की कथा pastimes को of सुन Yamuna लो, ji सारी or बाधाएं take a टल dip in जाएगी। Yamuna Jal, सही and समझ all रहे your हैं, distress महान will be removed. यमुना। तो शनि देवता ने भी कहा कि भाई चलो अब हमारे साथ, बोले नहीं, So even Shani Dev said that you मैं should कृष्ण come के along साथ with us. शादी करूंगी। And she said that no, I अब want कुछ to stay here चमत्कार and होने वाला है। with marry तो Krishna, शनि and देव he ने is to कहा यमराज manifest जी in some अच्छा, time. तुम And they both कृष्ण के sat साथ and said that शादी करोगी, you want to marry Krishna? मतलब हम दोनों भाई आगे चलकर कृष्ण के साले बनेंगे। So we will be brother-in-laws of तुम Lord दोनों Shri तो भगवान Krishna. के साले बनोगे। तो दोनों भाई अपनी बहन के चरणों में गिर गए, बहना And they तुमने bowed तो down हमसे at her वरदान मांग lotus feet. लिया, अब And तुम भगवान they की said that पत्नी होने वाली हो, you have तो तुम taken हमें भी benediction वरदान from दे us. दो। So please give us also यमराज benediction that you're शनि to देव के marry चरणों the में गिरे, Lord. चरणों में, अब हमें भी वरदान दे दो, क्योंकि हमारी बहन भगवान के साथ ब्याहेगी।
तो यमुना ने कहा बोलो भैया क्या चाहिए? So Yamuna ji said that, भाई what do you यमराज और desire? शनि देवता So ने they उन्होंने both कहा said, क्योंकि तुम कृष्ण की पत्नी बड़ी as you're going to सुंदर हो, marry कृपा Lord Shri करो Krishna, कि हम please भी bless us कृष्ण that की भक्ति कर सके। we are also able to यमराज do और pure शनि devotional देव service यमुना towards the Lord. आशीर्वाद दो कि हम भी कृष्ण की भक्ति कर सके। यमुना ने दोनों हाथ दोनों भाइयों के ऊपर And रख दिया, बोले Yamuna थैंक यू, ji तुम दोनों के हृदय blessed में them कृष्ण की भक्ति with है। their अब मैं आपको desire. कनेक्ट करा रहा हूँ So now let me connect कि it. जब यमुना ने यमराज को आशीर्वाद When दिया Yamuna ji आप gave श्री कृष्ण के benediction शुद्ध to भक्त बन जाओगे, आज के Yamraj, दिन के बाद यमराज जी का नाम 12 महाजनों में दर्ज हुआ, and इसके पहले नहीं था। in this श्रीमद् day, भागवत का वो श्लोक Yamraj मैं ji दिखाऊं, was considered as one of the श्रीमद् Mahajans. भागवत जी के Before that, छठे it स्कंद was में, not there. पांचवें स्कंद के छठे If you अध्याय में see, ये श्लोक है, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और वयम माने यमराज, ये यमराज जी का नाम 12 महाजनों में दर्ज हुआ। किसके so his कारण? name was registered यमुना महारानी। as Mahajan श्री यमुना because महारानी of की। Yamuna Maharani. मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना नाम भी यहाँ दर्ज कराना So चाहते हैं, if we स्वयंभू, want to नारद, शंभु, register कुमार, कपिल, मनु, our names प्रहलाद, also in जनक, this list, प्रहलाद, प्रतीक, जनक, भीष्म, अपना नाम यदि दर्ज कराना चाहते हैं तो यमुना महारानी का आश्रय, then we should take shelter of यमुना Yamuna महारानी की Maharani. कृपा हो जाए तो If हम you भक्त if we और get महाजन हो mercy जाएंगे। of Yamuna ji, भक्तों जी, then महाजन का अर्थ we क्या will है? get Krishna Prema इसके बाद के and श्लोक में Bhakti, भागवत pure जी लिखा devotional है, service towards the Lord. द्वादशेते विजानीमो धर्मम भागवतम भट्टा। ये 12 लोग जो है ना, So these भागवत 12 धर्म को विशेष रूप से जानते हैं are expert in और कैसे the गुह्यम विशुद्धम Bhagavatam गुरुतरम। philosophy and भागवत laws, धर्म बहुत गुह्य है, विशुद्ध and है, it दुर्बोध is है, इसे समझना बड़ा very कठिन है। intense and deep, and लेकिन it's very tough to यमुना महारानी understand. की कृपा But जैसे यमराज के ऊपर हुई और if इनके नाम we दर्ज हो गए, get यदि the कृपा mercy होगी of Yamuna तो यम ji, ज्ञात्वा then अमृत अश्नुते, इसको जानकर व्यक्ति अमृत हो जाएगा, माने नम्रित, person can अमर हो जाता है। become तो इस immortal. प्रकार यमुना महारानी के आशीर्वाद से यमराज जी महाभागवत बन गए So by the और यमुना mercy of महारानी की Yamuna कृपा से Maharani, उनके भैया शनि देव Yamraj भी ji became भगवान कृष्ण Bhagavad, के बहुत बड़े भक्त हो and गए। Shani Dev शनि also देव की became भक्ति जो a है ना, greatest वो devotee of बहुत the Lord. दिखावे की भक्ति नहीं है। And his हम कभी शनि pure देव को devotional ऐसा नहीं service is कहेंगे, not शनि देव like गोपनीय कृष्ण के us. भक्त है, He सीक्रेट is a डिवोटी, अंदर secret नहीं devotee दिखाते। of the जैसे Lord. हम लोग बाहर के दिखावे के He doesn't नहीं, show off शनि देव his गोपनीय भक्त है। service to the Lord. तो इस प्रकार आप विचार करो, यमुना महारानी की कृपा से यमराज So और by the शनि देव mercy को of Yamuna कृष्ण की ji, भक्ति मिल सकती है, तो हम Yamraj भी and मिल Shani सकते Dev हैं। तो got कैसे यमुना महारानी की pure कृपा devotional service of श्रवण the करते Lord. हैं, So we कैसे can also कस्तूरी get मस्तक it. है, And कैसी this यमुना महारानी pastime we are लीलाएं कैसे चलती discussing फिरी है। about इस her एक शब्द पर by आज great की कथा fortune. हुई है, आगे के So on श्लोक this हम word we पढ़ेंगे, have उसके पहले हम एक discussed. छोटा सा ब्रेक So let's take a भजन सुनेंगे small और break फिर इस कथा को आगे and बढ़ाएंगे। proceed further. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो बहुत सुंदर इस एक शब्द के ऊपर आज हमें काफी कुछ श्रवण करने को मिला इस भागवत कथा के अंतर्गत। सर्वप्रथम तो जैसे प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि आज अमेरिका के लिए एकादशी है और इस एकादशी की कुछ महिमा प्रभु जी ने बताई, शक्तिला। एंड देन जो एकादशी का सीक्वेंस प्रभु जी ने बताया, दैट वाज वंडरफुल, कि किस प्रकार साल की जो 24 एकादशी आती है और वी शुड ट्राई टू फास्ट एंड डू भजन, मैक्सिमम भजन इन इट। तो प्रभु जी ने इस का सुंदर रूपांतरण किया, बताया। और साथ ही साथ ये भी श्रवण करने को मिला कि एकादशी की महिमा श्रीमती राधा रानी ने जो बताई, और श्रीमती राधा रानी ने इस सुंदर महिमा को गोपियों को बताया था। एंड देन पद्म पुराण एंड अलग अलग पुराणों के माध्यम से इसकी जो महिमा है,
तो वो श्रवण करने को मिली कुछ प्रभु जी के मुखारविंद से। सो थैंक यू। और देन ये जो अद्भुत कथा हम श्रवण कर रहे थे कि जहाँ पर यमुनी कलिंदी मस्त के गिरी, जो यमुना महारानी की जो प्रागट्य की कारण रीजन बताए, अलग अलग 2 कारण प्रभु जी ने बताया। एंड वन ऑफ देम इज जो यमुना महारानी यमुनोत्री से अवतरण हुई और देन रेस्टेड इन विश्राम घाट। विश्राम घाट के भी जो अलग अलग नाम है जो प्रभु जी ने उच्चारण किए यहाँ पर, कि भगवान स्वयं वराह देव तथा भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु वासुदेव जी एंड देन यमुना महारानी स्वयं, इन्होंने विश्राम किया तो इनके विश्राम घाट स्थान का नाम हुआ। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आज की इस कथा में बहुत ही सुंदर, जानने योग्य, केवल इस एक शब्द के ऊपर हमने आज काफी कुछ श्रवण किया प्रभु जी के मुखारविंद से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर रिवीलिंग दिस सीक्रेट इन डिटेल। सो थैंक यू। आइए हम दर्शन करते हैं हमारे जो यजमान परिवार हैं जिनके द्वारा ये सुंदर गौ सेवा चल रही है प्रतिदिन, उनके दर्शन करते हैं और शेष कथा को प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो जैसे कि आज हमारे भारत के निवासी भक्तों के लिए द्वादशी है और द्वादशी के अंतर्गत हमारे आज यहाँ पर ये सुंदर सेवा की गई है यजमान परिवार के द्वारा, तो हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ अन्य और भी वैष्णव है जिन्होंने यहाँ पर एकादशी के निमित्त में सेवा की है। प्राय भक्तों की ये जो इच्छा होती है, ये ऐसे पर्व को खोजते हैं कि जिस पर्व में सेवा करके वो अधिक से अधिक स्वीकृति तथा अधिक से अधिक लाभ ले सके, जिससे कि भगवान की कृपा हो। तो ऐसे ही एकादशी तिथि शक्तिला एकादशी के अंतर्गत अनेक भक्तों ने सेवा की, तो उन सभी भक्तों का भी धन्यवाद करते हैं। और आज भी जो हमारे प्रतिदिन ये सेवा चल रही है हमारे पटेल परिवार के द्वारा, तो उनका भी धन्यवाद। और प्रार्थना करते हैं गौ माता से, जैसे प्रभु जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को जैसे सर्वाधिक प्रिय है वो गौ माता है, तो इन गौ माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये जो यजमान परिवार है तथा ये हमारे जो सभी अमृत चर्चा परिवार के ये जो सारे गौ सेवक हैं, उन पर विशेष कृपा करें और उनकी कृष्ण की सेवा में तथा वैष्णव की सेवा में और उनकी रुचि बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रकार निरंतर लगे हैं सेवा में। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण सेवा में जुड़े रहिए, बने रहिए, जिससे कि हम भगवान की कृपा को और सहजता से प्राप्त कर सकें। So there are various occasions which comes in our life जिसको हम हमारे इस गौ माता की सेवा के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल कि यदि आप भी अपने जीवन में आने वाले इन पर्वों को हमारे साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं या हमारी इस प्यारी गौ माता के साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे इस परफेक्ट सेवा नंबर के माध्यम से, जहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और गौ सेवा के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो this is the number where you can approach us, +91 756 754 5555। ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है where you can contact us regarding गौ सेवा। एंड ऑल्सो आप हमें ईमेल के द्वारा भी अप्रोच कर सकते हैं on sevaperfect@gmail.com। और साथ ही साथ हमारी जो ये वेबसाइट है दैट इज www.perfectseva.com। आप इन नंबर के माध्यम से, इन संपर्क सूत्र के माध्यम से हमें अप्रोच कर सकते हैं किसी भी प्रकार की गौ सेवा के लिए और अधिक जानकारी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आइए श्रवण करते हैं शेष कथा को गुरु जी के मुखारविंद से। हरे कृष्ण। गोपवृद्धा महोत्पाता ननु भूय बृहद्वने नंदादय समागम्य व्रज कार्यममन्त्रयन्। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य श्री वल्लभाचार्य यमुना अष्टकम के
इस दूसरे श्लोक में से In बहुत the शब्द second हम पढ़ verse रहे हैं, of लेकिन कलिंद के this जो शब्द के verse हम श्रवण is किए, अब discussing so चौथी many लाइन things. का प्रथम So शब्द है, in the शब्द fourth है line, मुकुंद रति वर्धिनी। the first word is गंगा Mukund महारानी कैसी है? Rati Vardhini. मुकुंद भगवान श्री कृष्ण So who is she? She जिसके is. अंतकली के समान दंतावली है, सुंदर दांत है, मुकु जो मुक्ति देने में समर्थ है, So who is परम सुंदर capable to liberate परम सामर्थ्य and वाला who है। is ऐसे extremely भगवान श्री beautiful कृष्ण की रति, रति माने प्रेम, and highly रति capable. उच्च कक्षा है, And तो मुकुंद रति वर्धिनी, तो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण and के Rati is रूप का वर्धन करने वाली the greater form of श्रीमती love, यमुना महारानी, इस शब्द and के ऊपर she is श्रीमद् capable भागवत से हम लोग to श्रवण करेंगे। increase पहले तो यहाँ the पे devotion towards the Lord. इसका संदर्भ जो So, है हमें भागवत से so मिलता है। let's take a reference from Bhagavatam for the तो श्रीमद् same. भागवत जी में In Srimad श्री Bhagavatam, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के 3 हरि भक्तों का वर्णन किया। Sri Shukdev Goswami describes 3 devotees ऐसे of तो the बहुत Lord. सारे हरि भक्त है ना, There are quite a लेकिन few 3 devotees of the ऐसे Lord, हरि भक्त but श्री mentioned सुखदेव गोस्वामी 3 कहते हैं, devotees which ये Shukdev ऐसे हरि Goswami भक्त हैं mentions that जिसको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। these are the devotees इससे whom क्या होता है कि हम जब even भगवान को Lord देखते हैं तो हम प्रसन्न loves होते to हैं। meet, or he भगवान को becomes ecstatic when देखकर he भक्त meets them. साधक प्रसन्न होता है। So लेकिन when 3 लोग भागवत में ऐसे usually दिखाए the गए, devotee गिनाए गए, gets ecstatic जो after देव जी seeing के the भक्त Lord, कहे गए, but there are 3 devotees of the जिसको Lord देखकर भगवान which are mentioned प्रसन्न by होते हैं, Shukdev ji. और केवल प्रसन्न ही नहीं होते, After seeing them, मुकुंद रति even the वर्धिनी Lord अर्थात becomes भगवान के हृदय में रति happy प्रेम वर्धन and होता है, his प्रेम love वृद्धि होती increases. है। ऐसे 3 भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में दिया गया है। And these are mentioned in श्रीमद् Srimad भागवत के Bhagavatam by 10वें Shukdev स्कंद Maharaj. 11वें अध्याय So में in the 10th एक chapter, प्रसंग है, 10th canto, 11th श्लोकों chapter, के अनुसार this is आस्वादन करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी mentioned in कहते हैं verses कि उस form. समय की बात है So जिस Shukdev समय Goswami said भगवान that कृष्ण it's 3 about the 3 time साल when के हैं, Krishna was 3 to चलना 4 सीख year रहे हैं, old and he और एक दिन की बात started है, walking, ये सब महावन में रहते हैं, and वृंदावन they में नहीं, live महावन in में। Mahavan, not in Vrindavan, that is Gokul. नंद बाबा सारे गोप गोपिया All the गोकुल में निवास है, Gop and गोकुल Gopis में are रहते in हुए Gokul, एक दिन की बात है, and once गोप वृद्धा on महोत्पात one day, ननु भूय बृहद वने, बृहद माने महा, वन माने वन, माने महावन में so in गोप वृद्धा बड़े बड़े Mahavan, बूढ़े गोप these elderly महोत्पाता, Gopas उन्होंने देखा कि गोकुल में बहुत उत्पात saw हो रहे हैं, that there were quite गोकुल में few अनेकों प्रकार के disturbances उत्पात हो in रहे हैं, बहुत Gokul. सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, There और were इस quite a प्रॉब्लम few के कारण गोकुल में disturbance and जितने भी obstacles in गोप Gokul, वृद्धा बड़े बड़े गोप थे, and the सारे elders गोप एकत्रित हुए। of Gokul सो नंदा दय gathered. समागम्य, ये सारे बड़े गोप ब्रज के गोकुल के समागम्य एकत्रित इकट्ठे हुए, So Samagamya, they एकं gathered कार्यम मंत्रयन, और एक प्रकार की मंत्रणा करने लगे। and they हमारी started भाषा में discussing. कहे तो गोकुल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। So आपकी there मैं was a मुंबई की huge भाषा में meeting कहूँ, ये मनीष शर्मा ये सब लोग हैं, in language of जो Mumbai. सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो हमारे वहाँ एजीएम होती है, एनुअल So there जनरल मीटिंग, it is called साल में AGM, एक the बार एजीएम annual होती है। general meeting जितने भी सोसाइटी मेंबर हैं, for all the सोसाइटी society में members. जितने भी लोग रहते हैं, साल में मिलते हैं और मिलकर झगड़ा And के अलावा कुछ नहीं करते। they meet झगड़ा yearly झगड़ा once झगड़ा, and they बस केवल just झगड़ा झगड़ा झगड़ा। fight and they don't do anything तो else. यहाँ पर एजीएम, भागवत में भी एक So here एजीएम हुई है, in Bhagavatam एजीएम, also there is one और AGM which गोकुल में happened, रहने वाले सभी घर का एक वरिष्ठ आदमी and उस मीटिंग में बैठा है, one और elderly person from मिलकर each family समागम्य was मीटिंग there, लग चुकी है, और and मंत्रयन they've gathered मंत्रणा करने लगे हैं। and they're discussing. अब हमारी जहाँ मीटिंग होती है वहाँ एजेंडा क्या होता है भाई, So पानी the क्यों नहीं agenda आ of रहा है, our
Meetings is why there is the loss of water, why the electricity problem is there, why it's not clean. मतलब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग का उद्देश्य हमारी इंद्र तृप्ति, So we हमारी do इंद्रिय meetings तृप्ति just ठीक for हो, हमारी इंद्र तृप्ति ठीक to से हो जाए। have maximum लेकिन facility धन्य है and sense ब्रजवासी, gratification. But ब्रज के great सारे are सारे लोग the मीटिंग में बैठे हैं inhabitants और of मीटिंग Raja, का केवल एक ही उद्देश्य है and their और वो है कृष्ण। agenda or goal is only केवल Krishna. एक ही एजेंडा है और वो है कृष्ण। भाई गोकुल में उत्पात हो रहे हैं They're और thinking that कृष्ण के ऊपर Gokul बड़ा is खतरा है, so much हमें कुछ distressed करना and चाहिए, ये disturbances, एजेंडा so है। we should आइए मीटिंग को try आगे to बढ़ाते protect हैं। Krishna. ये ब्रज की मीटिंग कैसे चलती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, As he is in great तत्र danger. उपानंदम आह गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय कृद राम कृष्ण यो। उस मीटिंग में So in that meeting, एक मेंबर बैठे थे, उस मेंबर का नाम था उपानंद। there तो was one नंद बाबा 9 भाई थे, Upanand. कुछ लोग कहते So हैं 5 Nand भाई थे, Baba कुछ were लोग कहते हैं 9 9 brothers. भाई थे। Some say that they were दोनों 9 सही है, brothers, some say that कजिन it's वजिन five, they were मिला के 5 आप brothers. 9 कर लीजिए, हैं? So by cousins and लेकिन all, it उसमें could be नंद 9. नंद उपानंद धरानंद इस प्रकार के नाम थे। उनमें से मंझले भैया जिसका नाम था उपानंद, One of तो them तत्र was उस मीटिंग Upanand, में उपानंद नाम के एक गोप थे और उस was गोप the का brother नाम of से Nand कहते हैं Maharaj, ज्ञान वय, वो ज्ञान and में बड़े वरिष्ठ थे, मतलब बड़े and ज्ञानी थे। he's introduced as और देश quite कालार्थ intelligent person. तत्वज्ञ, और ये उपानंद गोप जो है नंद बाबा के बड़े भाई, He was the elder वो brother भी of Nand काल की Maharaj, ज्योग्राफी जानते थे, भूगोल and जानते थे, he कौन सा was स्थान कहाँ पर, well versed तत्वों in को जानते थे। geography. और सबसे बड़ी बात, प्रिय कृष्ण प्रिय कृत राम कृष्ण यो, वो राम बलराम और कृष्ण का प्रिय करना चाहते थे। And राम he और कृष्ण, wanted बलराम और to कृष्ण have the कैसे best facility प्रसन्न हो, for Ram, ये बड़ी Balram, बड़ी or चीज है। and Krishna. तो इस प्रकार से मीटिंग है और मीटिंग में एक मेंबर होता है ना जो बोलता है, क्या कन्वीनर क्या कहते हैं उसे, So मतलब in the meeting, there is हैंडल a करने वाला। person who handles everything. तो ये मुखिया थे मीटिंग के। So he was सुखदेव the गोस्वामी कहते chief. हैं कि उस उपानंद ने अपना पॉइंट रखा And कि it's उत्थान Shukdevji says that गम्यम he इतो put अस्ति one point. गोकुलस्य हितैषिभिः, यदि हम गोकुलवासी अपना भला चाहते This हैं is that if we want और to यदि हम benefit गोकुलवासी ourselves, कृष्ण और बलराम का भला चाहते and if हैं, we wish the welfare of Krishna and आयान्ते Balram, यत्र महोत्पाता बालानाम नाश हेतव, तो हमें जल्द से जल्द इस स्थान को छोड़ देना then चाहिए। we should तो दो भाई leave उछल जाते, this बोले क्यों? place. बोले आपने देखा नहीं If आयान्ते somebody says बहुत that लोग आ why, रहे हैं, so that so महोत्पाता, many people are मतलब बहुत coming, बहुत महान उत्पात हो रहे हैं, and there is so much distress and बालानाम नाश disturbance in हेतव, Gokula, और जो भी लोग आते हैं ये बालकों को मारने के लिए आते हैं, and whoever comes, they want to ये kill the जो भी लोग आए कृष्ण को children, मारने के लिए आए। and the main purpose ये is तो to kill बहुत अच्छी Krishna. बात है कि बड़े बड़े असुर बड़े बड़े राक्षस आए। कुछ ही दिन पहले It आपने देखा is नहीं, our मीटिंग में ये great चल रहा है, fortune मीटिंग में ये that चर्चा है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा a नहीं, few days back, पूत कतश्चित राक्षसिया, वो पूतना नाम की the राक्षसी आई थी, Putna came बालकन्या बालको यशो, जो बालकों को मारने वाली, and बालकों को she used to किडनैप kill करने वाली, children वो and पूतना kidnap them, राक्षसी आई थी। and she came to लेकिन Gokul, हरि की कृपा तो देखो, and by the भगवान mercy of विष्णु the की कृपा Lord, तो देखो, हरेर अनुग्रहात नूनम अन्यश्च परिनापतत, हरि का अनुग्रह कि वो पूतना that आकाश से गिरी लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। she अब हरि तो fell उनके गोद में from बैठे the हैं, sky, मतलब वो but कृष्ण गोद में बैठे। ये nothing मीटिंग में happened to Krishna. मैं आपको बोलना भूल गया, जब ये मीटिंग चली So in तो this कृष्ण meeting, दौड़कर आए, नंद Krishna बाबा ने came उनको अपने running गोद में बिठा दिया। and he और sat ये in the मीटिंग lap हमारी of हाजरी Nand में Maharaj. मीटिंग हो रही है, So this कृष्ण meeting सुन रहे is हैं। being held in the गलती presence से of किसी Lord Shri राक्षसी Krishna. के हाथों से बच गया, भगवान And they say विष्णु की that बड़ी कृपा है। by the और mercy of राज के Lord लिए Vishnu, कृष्ण विष्णु का भी बाप है। Krishna was वो saved. But वात्सल्य they भाव don't में इतने know मग्न है कि that वो कृष्ण के he is the चरणों में father of विष्णु even है। Vishnu. But they are so much आगे बढ़ते हैं। engrossed in the parental अभी कुछ affection. दिन पहले
and worried for अब him. सब लोग बोलने लगे, हाँ हाँ वो पूतना तो आई, Then विष्णु की कृपा से बच गई, everybody said that, उसके yeah, बाद जो Putna देखने को came, देखा था and by चक्रवातेन Vishnu, हितोयम, he was saved. तो And बड़ा then चक्रवात बनकर तृणावर्त आया, a और huge तृणावर्त दैत्य न Trinavrat प्रियत, came बड़ी विपत्ति में कृष्ण को डाल दिया, in और the form of tide, तृणापतित, वह तृणावर्त शिला के ऊपर गिरा, and लेकिन he पतित fell down मात्र on a शेष रहे, stone. लेकिन देवताओं की कृपा से But ये by the कृष्ण mercy of the demigods, Krishna was saved सूर्य की again. तरह देवताओं की कृपा से कृष्ण बच गया। ये देवताओं पर कृपा करने आया है, देवताओं के बुलाने पर He's कृष्ण आया here है, लेकिन ब्रजवासियों because the को कृष्ण demigods have अवस्था called them, कहते हैं यत्र yet यन्न म्रियेत द्रुमयो। अभी अभी आपने कल देखा Brishvasis are वृंदावन engrossed in के so आंगन much में जो बड़े affection बड़े towards वृक्ष थे, Krishna. And बहुत then बहुत बड़े they वृक्ष add धड़ाम that there करके were गिरे, two huge और trees प्राप्य बालक और सारे बालक in वहां पर गिर पड़े, Ranmaraja's garden, तदावन तमोवापि तद and they अच्युतम fell, केवलम, और जैसे तैसे वो वृक्ष गिरे and और somehow बालक बच गया। Krishna was saved. इसलिए हमें So ऐसा लग रहा है कि we ये feel गोकुल that जो है हमारे रहने के लिए ठीक Gokul नहीं is not fit for है, यहाँ us पर to अनेक राक्षस stay आ रहे हैं, anymore because all the असुरों का demons are उत्पात हो रहा coming है, here हमें and there इस is so स्थान much को छोड़ना disturbance. चाहिए। So we should leave Gokul तब किसी ने for पूछा, good. भाई गोकुल छोड़कर कहाँ जाएंगे? So then somebody asked that, where कृपानंद जी will ने we कहा कि एक go? स्थान मैं जानता हूँ, So Kripanandji वनम said that I know वृंदावनम one नामम place वटव्यम which is नवद्वीपम। called Vrindavan, वृंदावन नाम का एक वन है जहाँ पर which is a भरपूर forest, मात्रा में घास है, and there और are huge पीपल के quantity वृक्ष, of grass. और Our हम भी cows हमें will वहाँ be बहुत happy सुंदर स्थान and मिला we है, can stay there तो हमें comfortably. वृंदावन जाना चाहिए। So we should सारे leave for सारे Vrindavan. लोग बैठे थे, बोलो भाइयों क्या कहना है, जाना है वृंदावन? एक दूसरे को सब So पूछने लगे। they were अब सोसाइटी की taking मीटिंग होती है, वहाँ कोई प्रस्ताव रखोगे, opinion सभी in लोग the अपना society अपना meeting. मंतव्य देंगे, लेकिन In the society ब्रजवासियों ने meeting, कहा, everybody gives different ब्रजवासियों ने opinion, but the जब ये सोचो Brajvasis, कितना बड़ा डिसीजन था, विचार करो it's such a कि huge उसियों से decision. लोग गोकुल में They have रहते been थे, staying बहुत पीढ़ियां from गोकुल में रहने वाली centuries है, in और Gokul, अचानक से and कृपानंद जी ने yet कहा कि इस स्थान को छोड़ो, they अपने want, घर बार they सब have to कुछ छोड़कर move हम वृंदावन ट्रांसफर हो and जाएंगे। shift to और ये Vrindavan. सबको पूछा गया, And और everybody फिर was सब लोग asked, and एक स्वर से everybody had the बहुत same सुंदर बोले। opinion in one voice. यहाँ They पे said, कहते हैं तत्श्रुत्वे अधिको गोपा साधु साधु इति वादिना। सारे गोप एक साथ हाथ ऊपर करके कहने लगे साधु साधु, and they all सबको agreed. मंजूरी मिल गई, Sadhu, sadhu means माने that, yeah, माने it's बहुत agreed. सुंदर प्रस्ताव है, और यदि That बाबा it is, कृष्ण और a, बलराम की रक्षा की है तो हम सब लोग अपना घर if बार सब कुछ छोड़कर it इस is नए the स्थान पर question विचरण के लिए of the तैयार हैं। safety and welfare of Balram भजान and स्वान Krishna, स्वान then we will स्वामिनः leave Gokul and विवृण्य shift to समुज्जता। Vrindavan. सब लोग अपने अपने बैलगाड़ी को, अपने अपने गोधन, अपने अपने घर सामान को So they लेकर gathered बैलगाड़ी everything में बैठे और from अपना their घर बार homes सब कुछ छोड़ छाड़ कर and वृंदावन left जाने के लिए निकल पड़े। for Vrindavan. भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सारा ब्रज रंगा हुआ है, So the whole फिर से सब लोग Vrindavan बैलगाड़ी में is बैठे engrossed और in सब लोग the वृंदावन love आ of गए। the Lord अब मुझे Krishna. आपको बताना है So now what I कि want जब to कृष्ण tell और you बलराम वृंदावन में is पहुंचे, that when तब सुखदेव Krishna and गोस्वामी Balram महाराज जी लिखते reached हैं Vrindavan, यमुना Shukdev महारानी को Goswami लेकर, announces about Yamuna Maharani. वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासित उत्तमा प्रीति, वीक्ष्यासित उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। वृंदावन
गोवर्धन और यमुना, ये तीन वस्तु को जब राम और माधव, राम और कृष्ण So ने when देखा, Balram and Krishna saw Vrindavan, Govardhan and Yamuna ji, तीन वस्तु को these three देखकर things, उत्तमा प्रीति, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में उत्तम प्रीति, प्रीति बढ़ गई, so प्रेम his उफान मारने लगा। जिस प्रकार love आचार्य जी increased ने कहा, manifold, as मुकुंद Vallabhacharya रति mentions here. भगवान Mukund कृष्ण Rati की Vardhani. रति प्रीति का वर्धन करने वाली यमुना, So और नीचे Yamuna भागवत ji का श्लोक है, increases विक्षासित उत्तमा the प्रीति, love यमुना of प्रीति the को Lord. देखकर And भगवान here का प्रेम it बढ़ is गया। proved in Bhagavatam. सुखदेव जी कहते हैं ये तीन वस्तु जो है, So Shukdev ji says that these three, इन तीन को देखकर बड़े when प्रसन्न होते हैं, Krishna sees वृंदावन, any गोवर्धन of और them, यमुना, क्योंकि ये तीनों then निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। he becomes वृंदावन ecstatic भाव रूप में because they भगवान की सेवा constantly करता है, serve the Lord. गोवर्धन भगवान के क्रीड़ा का क्षेत्र है, और Govardhan यमुना is भगवान the श्री कृष्ण playground की of the चलती हुई pastime of the Lord. नगरी है, जहाँ भगवान श्री And कृष्ण Yamuna लीला ji खेलते हैं। is the place where भक्त इस Krishna श्लोक का, अब ये तो सीधा plays श्लोक in है, water. इसका मर्म यदि समझना हो तो आचार्यों ने बहुत सुंदर टीका लिखी है। पहले So श्लोक if के you शब्द really हैं, want to और ये अंतिम understand शब्द है the नृप। mellow, सुखदेव गोस्वामी कथा कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे so हैं, कहते Shukdev कहते Maharaj जब इस श्लोक पर is आए कि यमुना saying को the देखकर Katha कृष्ण के हृदय में constantly, प्रेम बढ़ गया, प्रसन्न हो but गए, when he came तो to the कहते हैं point to नृप, say this मतलब verse, परीक्षित महाराज को then संबोधन देते हैं। क्यों? संबोधन का भाव क्या है? तो आचार्यगण टीका he में लिखते हैं, calls Parikshit Maharaj Nripa. वृंदावनस्य उत्तम तत्वम, हे परीक्षित, ये He जो says that गोवर्धन और यमुना जिसके विषय में Parikshit, मैं बताने जा रहा हूँ, तो these यमुना जो three, है, यमुना महारानी जो Vrindavan, है, Yamuna and ये Govardhan, which उत्तमम what तत्वम, ये I'm उत्तम telling तत्व you, है। so और these जहाँ are यमुना the महारानी की कथा होती है तो best. सावधान होकर उसे सुनना चाहिए। And when there is a pastime of Yamuna ji being discussed, सावधानतया then बोधनीयम, you should listen सावधानी रखकर सुनना चाहिए, carefully क्योंकि यमुना का जो तत्व है because उत्तम है। इति आशयेन she is संबोधयति नृप इति। the best सो इस श्लोक में नृप कहने का भाव ये है, tattva. अंत में नृप इसलिए कहते हैं क्योंकि सुखदेव So गोस्वामी कहना चाहते हैं he कि is जो यमुना का calling तत्व है him वो बहुत उत्तम है, Nripi, इसलिए इस कथा को, इस चीज को ध्यान से सुनना चाहिए। and he says that you अब should listen to यहाँ पर it क्या है? carefully. राम माधव, राम माने बलराम, माधव माने कृष्ण, ये दोनों यमुना को देखकर उत्तमा प्रीति, प्रसन्न हो गए। तो इस पर आचार्यगण अपनी टीका में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि So राम they माने became happy after seeing Yamuna Maharani. इस श्लोक में जहाँ And राम कहा, he says बोले that योगी Ram जन अति signifies, मनो रमत्वात् इति राम। ये कोई साधारण नहीं है बलराम, बड़े बड़े योगियों का मन so जो Balram प्रसन्न is होता no है, बड़े ordinary बड़े योगी जिसका स्मरण person, करके आनंद लेते हैं, ये वो बलराम greatest है, of the ये वो sages who बलराम है, meditate यमुना को on देखकर प्रसन्न होते हैं। Krishna, बड़े बड़े योगी who बलराम को meditate देखकर on प्रसन्न होते हैं, Balram, लेकिन बलराम they become happy on seeing him. But Balram ji तुम्हारे काम की बात है, becomes दूसरी लाइन जो है ना happy बिल्कुल काम after की है। seeing Yamuna ji. बोले The माधव, second line इस is श्लोक में suitable वर्णन for किया us. गया कृष्ण को, बोले So माधव here it's लक्ष्मी mentioned पति, Krishna as Madhav. माधव, माधव So माने who माँ is लक्ष्मी, the माधव माने ईश्वर, husband of तो दुनिया के लोग the goddess of लक्ष्मी को देखकर fortune, प्रसन्न Lakshmi होते ji? हैं। So, लक्ष्मी अपने पति माधव को देखकर प्रसन्न होती है, so लेकिन माधव people get यमुना happy को after seeing देखकर Lakshmi प्रसन्न ji, होते हैं। but ये Lakshmi वो ji परम gets है। happy after seeing Krishna, but तो बड़े बड़े Krishna योगी जिस राम को becomes देखकर प्रसन्न happy to होते हैं, see Yamuna दुनिया के ji. लोग लक्ष्मी, This लक्ष्मी अपने is पति the माधव को greatness देखकर, of Yamuna और Maharani. माधव कृष्ण इनको देखकर। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन देते हुए कहते हैं, So he concludes, तयोर अपि वृंदावन आदिनी वीक्षतमा प्रीति आसीत, अन्यस्तु का वार्ता। जब भगवान यमुना को देखकर प्रसन्न हो गए, when the दुनिया Lord के लोग became यमुना को ecstatic देखकर प्रसन्न
after seeing Yamuna ji, then even ordinary person become ecstatic after seeing Yamuna ji. So after seeing her, the there was no limit of his love which manifested in Krishna's home heart. So Krishna became so much happy or ecstatic. So if we ask how much, then it's answered. वैकुंठ अपेक्षया वैकुंठ से भी अधिक कृष्ण के हृदय में प्रीति और प्रसन्नता हुई वैकुंठ को देखकर जितना आनंद होता है So the pleasure that gets after seeing Vaikuntha, even more than that, he gets happy after seeing Yamuna ji. मधुपुरी धनिया और And he इसीलिए तो quotes मथुरा a verse. जहाँ And यमुना that is the बहती है reason वो मधुपुरी Mathura, मथुरा धन्य है और where वैकुंठ Yamuna ji से भी flows, यसी is जो वैकुंठ से great. भी उत्तम है क्योंकि And वहाँ it is यमुना बहती है even better इसीलिए than वहाँ को Vaikuntha. देखकर भगवान वैकुंठ को देखकर उतना प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न यमुना महारानी को देखकर होते हैं और यमुना महारानी साक्षात भगवत स्वरूप है और And इसीलिए she is the epitome of Bhagvatam itself. योजन एवासित वनम देव रूपकम कालिंदीय सुयुष आख्या परम अमृत वाहिनी ये जो यमुना महारानी जो है पंच So योजनम this Yamuna Maharani यमुना महारानी 5 योजन में बहती है flows in इसका 5 5 योजन yojanas में यमुना का तट in है Braj. और ये देह रूपकम ये स्वयं भगवान के शरीर स्वरूपा है And she और is ऐसी herself कालिंदी परम the अमृत वाहिनी incarnation of the Lord. साक्षात अमृत को ही लेकर बहती है And तो ऐसी यमुना the महारानी nectar को flows देखकर within her. भगवान के मन में परम प्रीति का अनुभव हुआ इसलिए कहते हैं And the Lord मुकुंद रति felt वर्धिनी so much love. मुकुंद रति And that is why she's और mentioned as Mukund Rati Vardhini. जयति ऐसी यमुना And महारानी की जय in the हो end, he says, हो Jayati, पद्म that बंधो I सुभगे आपकी जानकारी के bow लिए down ये at her यमुना में lotus बहुत feet. कमल खिलते हैं So, और for your जब information, श्री कृष्ण का Yamuna जन्म ji हुआ is always तो filled जब with कृष्ण को लेकर lotus यमुना में आए flowers. And तो when यमुना महारानी ने Vasudev कृष्ण ji के came चरणों with में Krishna, अब मैं 2 महिमा यमुना जी की आपको बताऊं so let me add पहली 2 महिमा glories of कृष्ण Yamuna पूछा ji. Let me ask you a कृष्ण question. की कितनी पत्नियां हैं How many wives are of Krishna? 16108 16,108. कृष्ण की कितनी गोपियां हैं And how many कोई फिगर gopis? ही नहीं है So असंख्य there is गोपी no 16108 figure, it's पत्नी innumerous. और असंख्य गोपियों में सबसे पहले कृष्ण के चरण का स्पर्श किसने किया So out of all these, who got the opportunity to touch the सारी lotus feet of the पत्नियों में Lord? सारी गोपियों में सबसे पहले कृष्ण का चरण किसने स्पर्श किया यमुना That is Yamuna ji. और 16108 पत्नी और सारी गोपियों में सबसे पहले कृष्ण के चरणों में कमल किसने चढ़ाया फूल किसने And who was able to offer lotus flower तो इसका उत्तर भी है to him for यमुना the first time before everyone? कृष्ण The के answer चरणों के for स्पर्श this का is प्रथम also सौभाग्य Yamuna यमुना को ji. मिला She और was the कृष्ण first के to चरणों में touch the फूल lotus चढ़ाना feet and to कृष्ण के offer चरणों her में सेवा पूजा करने का प्रथम सौभाग्य service by offering यमुना flower महारानी at her को lotus मिला feet. ये है यमुना Both की these महिमा feats were हरे accomplished by कृष्ण Yamuna Maharani. So that is the glory of संगत Yamuna Maharani. Hare बड़े भाव Krishna. से You all बड़े heard प्रेम और श्रद्धा से this श्रीमद् katha with भागवत so गीता much का love and आप सभी affection. भक्तों का भरी भरी धन्यवाद I am really और grateful to all of you विशेष धन्यवाद and specially पटेल thankful परिवार की to the Patel पवित्र family स्मृति on में whose विचार reverence बनाकर this समग्र पटेल परिवार katha ने has इस been कार्यक्रम organized का by आयोजन this किया family. ऐसे प्रतीक भाई So Pratik दर्शना Bhai, माता Darshana पीयूष Mataji, भाई Piyush जयश्री Bhai, माता Jai Shri Mata, अमरीश भाई
Amrish Bhai, Yamuna Mat, Pulin Prabhu, Mohini Mataji, Amrish Bhai, and Arpana Bhabi. We are really grateful to all of you. Krishna Mataji has texted, the katha should be endless, it should not end. Even we feel the same. जैसे यमुना बह रही है, ऐसे कथा की धारा बहती रहती है, लेकिन हम सब एक समय की मर्यादा में, So, but we all are bound by time. So if तो यहीं पर मैं विराम करता हूँ, I will stop here, and tomorrow we will आएंगे present some new thoughts and we'll listen to this Bhagavatam and we will dip in the holy waters of Yamunaji and we will do Abhishek of the Lord. So on the let's end this session with Jai Jaikar. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की